सो डॉक्टर, आपने अपने तजुर्बे में क्या देखा है कि व्हाट इज द मेजर स्किन प्रॉब्लम यू सी फ्रीक्वेंटली इन योर पेशेंट्स? So nowadays, cases of pigmentation and cases of fine lines wrinkles ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. ठीक है, because of the early aging, UV damage, UV radiation, so all of these concerns. So what's the one treatment you recommend that solves all of this problem? So there is no one-stop solution for all of these problems as different concerns हैं. But yeah, my go-to treatment for that works. We have to choose and customize. Yeah. But that works for pigmentation cases, uneven skin tone, and also for the fine lines, wrinkles is chemical peels. So what is chemical peels? So basically, chemical peels are chemical solutions that are in a concentrated form. आप रेटिनॉल यूज़ करते हो, आप विटामिन सी यूज़ करते हो सिरम्स में, डेली में या क्रीम्स में यूज़ करते हैं. सो उनके परसेंटेजेस बहुत कम होते हैं, से 0.5%, 1%, encapsulated 2%, that is the max. So basically concentration of these active ingredients in the chemical peels is more, and it is targeting exfoliation at an appropriate level. Yeah. At an appropriate level that is desired for your skin to give the results or to work for that particular concern. So chemical peels में we have different kinds of chemical peels and contact time depend करता है आपका क्या skin concern है, किस layer पे हमें काम करना है, या क्या skin concern पे किस chemical peel ने काम करना है. So for lesser contact, it is giving lesser contact time and it is giving you better results. So that is. These days my Instagram feed is full of those reels जिसमें upper layer of the skin is pulled off using phenol chemical peel. So is it true, like does that really happen? So that was ages ago when we did not have that kind of advancements. Aajkal phenol peel, yes, phenol is a very deep surface peel. So it's not, we have different kinds of peels. Either they're working on the surface levels, so superficial thickness peels, medium thickness peels, and deep peels. So they target the different layers of the skin. Superficial targets only the first two layers of the first layer of the skin, maximum third layer तक जाती है. Then medium depth peels जो होती हैं वो कुछ fourth fifth layer target करती है, and then deeper peels they target the dermal layer and the deep dermal layers. So phenol peel is one that is deep chemical peel. So that is targeting the deep layers. आजकल फिनॉल पील का फॉर्मुलेशन बहुत चेंज कर दिया गया है, परसेंटेजेस कम कर दी गई हैं, उनके साथ एडिटिव्स में और फॉर्मुलेशंस भी ऐड कर दी गई हैं. सो वी हैव हाइड्रेटिंग एजेंट्स आल्सो दैट डू नॉट गिव दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. Redness. बिकॉज वो डाउन टाइम आजकल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो यू नो वन हैज दैट काइंड ऑफ 10 to 15 days फॉर वंस टू गेट पीलिंग सेशन डन, एंड देन उसके बाद घर बैठो एंड यू कैन नॉट, यस एग्जैक्टली, एंड यू कैन नॉट गो आउट टू वर्क और यू कैन नॉट गो आउट इन द सन. दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो बेसिकली द फॉर्मुलेशन एंड ऑल हैज चेंज्ड and it has been revised. The percentages are coming lower. Phenol peels also, though they are deep peels, but उनको medium thickness peels में रिवाइज कर दिया गया है. So this is how it is there. So what are the different types of chemical peels apart from phenol peel that हमने अभी जो डिस्कस किया? What all types of chemical peels are there in the market? So जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सुपरफिशियल थिकनेस पील्स हैं, मीडियम थिकनेस पील्स हैं, डीप पील्स हैं. अब सुपरफिशियल पील्स में वी हैव आल्सो हर्ड ऑफ AHAs and BHAs. AHAs is nothing but alpha hydroxy acids, that is the glycolic acid, lactic acid, the lighter acids. So वो काम करते हैं सुपरफिशियल जो थिकनेस पे स्किन की. Then comes the medium thickness, that is BHAs, the beta hydroxy acids. Salicylic acid हो गया. So we have kojic acid that works pretty much superficial also and deep also. Azelaic acid, that is also something that works on both the layers. So beta hydroxy acids is pretty much the medium thickness peels. And then we come to deep peels. So deep में आपका phenol आता है, but उसका formulation अभी जैसे मैंने बोला concentration या और चीज़ें add होके तो better हो गया. Then comes retinol peels. Retinol peel is very good for textural changes, for fine lines, wrinkles, for uneven skin tone, basically anti-aging. So फॉर्मुलेशन में रेटिनॉल के अलावा और चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं, जैसे ट्रानेक्सिमिक एसिड है,
पिगमेंटेशन का केस है तो फिर वी गो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. सो दैट इज pretty much lactic acid peels बहुत अच्छी हैं for hydration. So that is alpha hydroxy acid peel या superficial thickness peel. So this is there. So there are many kind of peel, हमने ये पढ़ा है, समझा है अभी, और सब different concerns के लिए. But who should actually go for chemical peel and who should avoid it? So number one important thing is कि आपको समझना चाहिए if you're having sensitive skin, you should pretty much avoid or get a consultation first before getting any chemical peel or any kind of chemical peel. Number two important thing is you should always prime your skin before getting peels. So peels अभी हमने डिस्कस किया concentrated form में है. So आपकी स्किन जब तक prepared नहीं है, prime नहीं है, आपकी स्किन कई बार accept भी नहीं करेगी. Though chemical peel is a very basic procedure, but obviously you will have more chances of getting sensitivity. And third important point is you should always understand that post procedure care भी जैसे हम बताते हैं, next 3 days के लिए, next 5 days के लिए अगर आपको बोला गया कि थोड़ा मीडियम या सुपरफिशियल थिकनेस फील हो रही है, सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, सो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ टाइम ओनली, then you can get the chemical peel session done. अगर आपके पास 3 दिन नहीं है so better you do not get anything done. So that is there. And particularly how many sessions are needed in chemical peel? So basically first steps first, always consultation is taken. ठीक है, you are coming with your concerns, be it fine lines, uneven skin tone, wrinkles, ठीक है, pigmentation, melasma है, dry dehydrated skin है. So after the consultation is done, then we choose क्या टाइप ऑफ पील आपके स्किन के लिए जाएगा या आपके कंसर्न के लिए जाएगा. देन दैट ऑल्सो डिपेंड्स, अभी आपने पूछा नंबर ऑफ सेशंस, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट or the grade of the skin concern that you're having. See, if you're having pigmentation, that is also in deeper layers, so it will always take at least 4 to 5 to 6 sessions. ठीक है, that I'm not saying कि for sure इतना ही होगा, but tentatively इतना होता है, because we also need to understand deeper layer में जाने के लिए हमें शायद कभी और चीज़ें भी ट्राई कर, मतलब का भी हेल्प लेना पड़ता है, such as laser toning or such as micro needling if the pigmentation is chronic. ठीक है, and apart from that 4 to 5 to 6 sessions is pretty decent. These sessions are always taken 3 to 4 weeks apart. ठीक है, that will always depend on your skin concerns and your dermatologist's guidance, because certain peels are थोड़ा सा deeper, so such as TCA, such as retinol, so we always like to take sessions after 4 weeks. Otherwise 3 weeks is pretty decent. So there must be some reaction from this chemical peels for, so क्या कोई side effects भी होते हैं after chemical peels? So what you should expect post the session? So basically थोड़ा सा skin पे exfoliation होगा, that is very normal, because if your exfoliation is not happening, some peels में exfoliation होता है, कुछ peels में exfoliation नहीं होता. ठीक है, so superficial peels जो है उसमें exfoliation नहीं होगा. अब superficial peels हम कब use करते हैं, से किसी की skin dry dehydrated है तो lactic peel works very nicely. उसमें exfoliation नहीं होगा, it's just going to hydrate your skin. It is also called as party peel. Just before before any event, so you can get that for done. instant glow. For instant glow. But and other thing is कि अब glycolic peel, ये सब peels में exfoliation उतना नहीं रहता है. Medium thickness और जब हम deep peels की बात करते हैं वहाँ पे exfoliation आता है. So exfoliation in a controlled manner is what is happening with the chemical peel sessions. That is very important. लोग घर में भी कर रहे हैं AHA, BHA, लोग घर में भी कर रहे हैं exfoliation, physical exfoliants भी use कर रहे हैं, but that is damaging because it's not in a controlled manner. They are disrupting the skin's barrier. But instead when we shift to chemical peels, this is a controlled manner and a chemical way of exfoliation which is always preferable. So sensitivity होने का तब होता है जब आपको जो precautions बताए जाएंगे after your consultation or after your peel sessions. So sun exposure से हम बोलते हैं totally avoid करना है for the next 3 to 5 days. Wash your face with normal water. Do not use any actives for the next 3 to 5 days. That depends on the kind of chemical peel that we are using. So say if I'm doing a medium to deep thickness peel, so I'll always suggest 5 days का exposure avoid करना है and 5 days का actives avoid करना है. You can get back to normal routine after say 5th day or 6th day. Sun exposure is super important, and always be very verbal
in whatever you're feeling post the session. So 3 days पे follow up calls जाते हैं, 5 days पे follow up calls जाते हैं. अगर आपको भी कुछ feel हो रहा है तो आप you can always inform the concerned person. We also ask to avoid traveling or any dirt dust exposure of any kind. So shopping के लिए हम usually मना करते हैं, या अगर आपको बाहर जाना है, outdoors रहना है, पूरा दिन dirt dust का काम है, shopping के लिए जाना है, so that is always advisable not to be done. Yeah. So that much is pretty combined कि आपने side effects भी बता दिए हैं and don'ts and must do's भी बता दिए हैं. So thank you so much, doctor, You're welcome. for letting us know all about chemical peels.